Namaste and welcome once again everybody on this learning platform, and we are doing Attitude chapter 3 of English Reader. Now let's do the next part, that is read the following views of great thinkers. Now sometimes you get motivated by the different proverbs or by the sayings of the people who gave it to motivate, to inspire the people around. So these are the great thinkers. Now Edmund Hillary. It is not the mountain we conquer, but ourselves. मतलब हमें लगता है कि कोई पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जीतते हैं, जब तक अपने आप को विन नहीं करते, कॉन्कर मीन्स टू विन, तब तक हम लोग किसी चीज़ को जीत नहीं सकते हैं. सो इट इज़ सेड दैट वी डू नॉट कॉन्कर माउंटेन बट आवर सेल्फ. To me, it's very simple. If you are going to be thinking anyway, you might as well think big. Means Donald Trump, the ex-president of United States of America. तो उनका कहना है कि जब तुम्हें सोचना ही है, if you have to think, why not think big? I have never been poor, only broke. Being poor is a frame of mind. Being broke is only a temporary situation. So inspiration, ये इंस्पिरेशन देने वाला सारे कोट्स हैं. सो मेजर जनरल लाउस एच विल्सन हैज़ गिवन ट्रू जीनियस लाइज नॉट इन डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल. मतलब कोई भी काम सिंपल नहीं होता है. सिंपल काम को भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में अच्छी तरह से किया जाए तो वो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है. अल्बर्ट सेजेंट गायरोजी. Discovery consists in seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. Thinking out of the box. और ज़्यादा सोचना है, और ज़्यादा सोचना है. Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards. Exactly. Life is a teacher which gives you experience and teaches you later. Okay. So football is a rules and discipline, and I happen to think that that's what life is all about. David Browning. So these are the people who have inspired by their sayings, what they thought. People got inspired by these words. Their attitude changed. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. मतलब एडमिरल हाइमन रिकोवर. तो जितना ज़्यादा शांति के लिए काम करोगे उतना ही कम ब्लीड मीन्स खून बहाना, ब्लड से ब्लीड हुआ, तो वार में खून नहीं बहेगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज़ देयर? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ईच वन ऑफ देम डिस्क्राइब्स a state of mind, whether you are having a positive attitude or a negative attitude, is your opinion, that is state of mind. Choose the right word from those given in the aid box to describe each feeling and use it appropriately to fill in the blanks. Use a dictionary if required. Now you have to use these words. Depressed means you are very hopeless, hopeful. Repent means regret. Nervously means you are not very sure of anything. Relief, relax हो जाना. Nostalgic, you are feeling पुरानी बातों को याद करके कुछ ऐसा फीलिंग जो आता है कि वापस वो टाइम आ जाए, तो दैट इज़ नॉस्टैल्जिक फीलिंग. इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी. अनॉयड मीन्स यू आर नॉट हैप्पी, मतलब चिड़चिड़ा हो जाना. एस्टॉन्डेड मीन्स यू आर वेरी सरप्राइज्ड. अचानक से कुछ चीज़ आता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, दैट इज़ surprised feeling. So Ronit, I have filled all it here. Ronit and Rohit were astounded when they saw the car moving without driver. हैरान रह गए, they were surprised. Finish your work in time or you will repent later, means regret होगा. Repeated blanks call annoyed Smita greatly. मतलब बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा. Tim Tom heaved a heaved means सांस लेना जोर के, sigh of relief after being rescued from the kidnappers. Next is looking at the old photographs in the album. Mr. Chaturvedi felt nostalgic. पुरानी बातों को याद करके. Full stop. Sentence begins with capital letter and ends with full stop. Always remember. I advise you not to watch this sad and gloomy film.
ग्लूमी मीन्स जो अच्छा नहीं लगता है, जो पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा हो, दैट इज़ ग्लूमी. It will depress you. Sukriti was elated on finding an email from her dearest friend in the mailbox. We are hopeful of his speedy recovery. Hopeful. Manohar buttoned his coat nervously as he realized to go for the interview. Nervous हो जाना. Imagine that you are eminent personality, a scientist, a leader, an artist, anyone. मतलब you are very famous. मतलब eminent means जिसको सब लोग जानते हैं. You have invited by television news channel अब तक for an interview in the program. What you think reply to the question of the interview. Now you have to act as a eminent personality and you are being interviewed. Okay, so you have to act as that you are already famous. You may be scientist, leader, and what how you have become successful, you have to give interview. Okay, now I have filled this, though it has not come up clearly, but okay. How will you define success for yourself? For me, success is giving your best and leave द रेस्ट. बाकी सब छोड़ दें, अपना अच्छा करना है, बाकी सब भगवान के हाथ में. वाई हाई गोल्स डिड यू और वॉट हाई गोल डिड यू सेट फॉर योर सेल्फ? आई नाउ दिस इज़ वॉट. अब आगे क्या सोचा, इसके बारे में पूछा जा रहा है. तो क्या सोचना है भाई? और अच्छा करना है. आई विल पुश माई सेल्फ टू बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड लीव अप टू द एक्सपेक्टेशन. जो बाकी लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं अपने आप से अच्छा उम्मीद करूं और बाकी लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूं. ओके, एक्सपेक्टेशन को मैं फुलफ़िल कर सकूं. ओके, विच पर्सनल क्वालिटी हेल्प यू इन क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस? मीन्स इफ़ यू आर एमिनेंट पर्सनैलिटी, यू हैव अचीव्ड समथिंग. इसका मतलब सक्सेस मिला है. तो कैसे सक्सेस मिला है? तो कैसे सक्सेस मिलता है? जनरली हाउ यू गेट सक्सेस? by perseverance. Perseverance means when you do something continuously, बिना रुके किसी काम को जब लगातार करते हैं, that is perseverance. And determination, strong determination and strong positive attitude. पहले से ही सोच लोगे कि काम नहीं होगा. If you have a negative attitude, you will not win. So you have to have positive attitude. Next, how did you manage to overcome the challenges that you faced during the initial years of your struggle? Obviously, nobody succeed just in one day. ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई सक्सेसफुल हो जाता है. One has to taste the bitter fruit of failure also. So, what we do, we learn by our failure. So, I overcome challenges by focusing on more practices. और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया बस, और क्या करना है. If someone is not able to reach the goal despite their best effort, would you call them a loser? नहीं भाई, कैसे भाई? ट्राई तो कर रहा है वो बंदा. Never. One is never a loser even though one does not reach goal. One is enriched. नहीं भी कुछ मिला तो बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलती है. ठीक है. सो एनी स्पेशल मैसेज फॉर ऑडियंस. नाउ यू आर फेमस. अगर फेमस हो जाओगे तो तुम्हारी बातों को सब लोग सुनेंगे. तो मैसेज तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज फॉर ऑडियंस. तो कुछ भी अच्छा लाइन बोल देना है भाई. बिलीव इन योर सेल्फ. ओके. सो नेक्स्ट इज listen to the audio CD titled Listen and Comprehend Class 7. After listening, answer the question asked in the audio CD verbally. Listen to the tape script once again and attempt the given question. The tape script is given on the page number 86. Let's move to the page number 86. 86 page number. So let's quickly let's do the page number 86 first and thereafter we will complete it. Okay, this is page number 80. State of mind. This is a lovely poem. State of mind means what you think. What is your state of mind? If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. मतलब पहले से ही अगर सोच लोगे कि you are loser, you will be loser. If you think कि मुझ में हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे में हिम्मत कभी नहीं आएगी.
if you like to win but you can't, it's almost a cinch. Cinch means certainly. It's almost a cinch you won't. Matlab what you think, that will happen. So you have to have positive attitude, so that if you think that you can do, you will do. If you think you will lose, you are lost. But out in the world we find success begins with a fellow will. Fellow wills means किसी भी अगर बंदे का एनी फेलो मीन्स अ पर्सन, पर्सनस विल होगी, इच्छा होगी. विल मीन्स इच्छा, मतलब स्टेट ऑफ माइंड, जो वो चाहेगा तभी हो सकता है. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. इफ़ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, you are, and you have got to think high to rise. You have got to sure of yourself before you can win the prize. So lovely lines. Let's battle don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. Obviously, here this lovely lines tells that life battles, मतलब कोई भी जीत हार जो होती है वो उन लोग की नहीं होती है जो द पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी फास्ट, उन लोगों की होती है. दोज पर्सन विन्स अवे द बैटल्स ऑफ लाइफ हु सुना, मतलब बाद में या पहले कभी ना कभी वो जरूर जीतेगा. हु थिंक्स दैट हु ही कैन और शी कैन, सो is the man who thinks he can. So if you think you can. Okay, so this was a lovely poem that on the basis of this we have to do page number 72. Now this is week point 4. Now listen to the poem entitled State of Mind and discover who a winner is. On the basis of your listening to the poem, say whether the following statements are true or false, but put T or F in the space provided. Very easy. Now you have read the poem. Now try to answer it. Hard work alone leads to success. बिल्कुल hard work pays off. One must set high target. Correct. True. The strongest man wins life battle. Not necessarily. स्ट्रॉन्गेस्ट मैन विंस लाइफ बैटल्स ज़रूरी नहीं है क्या. जो सोचता है वही जीतता है. तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट या फास्टर होने का ज़रूरत नहीं है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ चांस दैट वन विंस. कभी नहीं, चांस नहीं होता है, कोई ट्राई करता है तभी जीतता है. अ स्ट्रॉन्ग विल पावर स्पेल्स सक्सेस. करेक्ट. अगर इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर यू विल गेट सक्सेस. अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. वेरी करेक्ट. पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है, तभी लाइफ में सक्सेस मिलेगा. व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज ऑफ द पोम डिस्कसेस पेयर. एंड व्हेन यू हैव रेड द पोम you have the message, that is a positive attitude toward life is most important trait to be successful. A person's state of mind matters a lot. So its answer is correct, complete. In order to be a winner, one needs to inculcate certain qualities. Categorize the qualities given below, match the qualities of a winner and a loser and write them down in the space provided. This one is easy one and I hope you can do it. सो विनर का क्या एटीट्यूड, उन लोगों के पास क्या क्वालिटीज़ होगा. दे विल बी डिटरमाइंड, दे आर डिलीजेंस. डिलीजेंस मीन्स दे डू हार्ड वर्क. दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर ऑप्टिमिस्ट, दे हैव अ resolution. Resolution means strong determination to do something, to carry out something. If they decide, they stick to it and do it. एंड लूज़र क्या होता है, वो हमेशा सोचेंगे अरे गलत ही होने वाला है. पैसिमिज्म मतलब ऑप्टिमिस्ट. द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट इज पैसिमिज्म, मतलब निराशावादी. डिसअपियर, होपलेस हो जाते हैं, नर्वस रहते हैं, एंजाइटी हो जाता है, चिंता ही करते रहेंगे. दे विल कीप ऑन वरिंग कि भाई क्या होगा आगे, क्या होगा, हम तो कर नहीं पाएंगे, वी आर नॉट कैपेबल. दे हैव दैट फीलिंग. सो वन शुड ऑलवेज हैव the winner attributes, that is you must have determination, diligence, confidence, optimism, and you should have a strong resolution. Now read the beginning of a story. The alarm went off with a sharp twang. Kalpana briskly means very fastly, got out of the bed and began to get ready to go to the school. Her mother handed her the tiffin and the water bottle, giving her a peck on the cheek. पैक ऑन द चेक मीन्स एक छोटा सा किस कर देना अपने
तुम्हारी मम्मी, या फिर प्यार से जो पैट कर दिया जाता है ना, गाल के ऊपर थपकी दे दी जाती है, उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो कल्पना रश टू बी इन टाइम फॉर स्कूल बस, मतलब मम्मी ने प्यार से अपनी डॉटर को स्कूल के लिए भेजा। नाउ फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 4, लेट ईच ग्रुप सेलेक्ट अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड, लेट देम कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द चूजन स्टेट ऑफ माइंड एज द undercurrent of the story. Now you have to form a story. Now we will do it in the class, and sometimes we often plan things in advance and look forward to executing our plan. हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन क्या होता है, वैसा होता नहीं है जो हम लोग सोचते हैं. what we think it doesn't go that way. But many times things do not happen the way we want them to. Think of a day when everything went wrong. Give reason about the spoiled day. मतलब जो सोचा सबका उल्टा हो गया and you did not have a good day. तो ये सबकी लाइफ में कभी ना कभी होता है. तो you have to frame, you have to recall that day where everything went wrong and how did you tackle it. So you have to write it here. और फिर how did you feel कि भाई जब कुछ चीज़ अच्छा नहीं होता तो you feel bad. बट एट द सेम टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट्स. अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो नेवर गेट disheartened by a bad day. In fact, learn lessons from that. Describe to your partner how you felt when the day was over. Read the following situation. Discuss in group of 4 that you would in situation. क्या करोगे when man walking on the road is. इस situation में क्या कर सकते हो. What you will do if you will find if you are caught in such situation. A man walking on the road is hit on the back by a rashly driven car. Hit हो गया तो क्या करोगे. You will definitely go and help him. A boy swimming in a pool screams for help. Of course you will try to find a help for the. अगर तुम्हें swimming आती है you will jump and rescue the boy. But if you are not a swimmer you will call the guard over there to help him. A servant swallow a coin by mistake. You will immediately inform the doctor or take him to the doctor. And what you will do if you never suffer a severe asthmatic attack. asthmatic attack भी हो तो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, या फिर जो inhaler होता है they should be given. A family member cuts his finger with a sharp knife and finger is bleeding profusely. तो क्या करोगे, जल्दी से बैंडेड फर्स्ट एड का इंतज़ाम करोगे. That is the thing that one should do and one does, right? Now see here. Now see this part. This is about Richter earthquake. And Richter is the scale on which earthquake is measured. The earthquake that struck Gujarat on January 26, 2001 was the most devastating. Devastating means मतलब पूरी तहस नहस करने, बर्बाद कर देने वाला natural catastrophe. Catastrophe means a sudden event that causes great destruction. That is given there at the bottom of the page. The destruction was on an overwhelming scale. Overwhelming means very large. It means it is difficult to control it. As soon as the dust cleared, men, women and children had to take control of their own destinies and the destinies of others. As day passed, there were many moments of sadness and despair, as well as hope and joy, and countless examples of uncommon courage. You know, such kind of catastrophe gives a people a difficult time, and the people have the tendency to find the solution, find the happiness even when they are, survival is the basic instinct of everyone. So let's read the story, or shall we do it later? Okay, let's do it later. That's all for today. That's all. Bye. Thank you.